Hello everyone and welcome to my channel Shades of Mex. Today I have a special guest on my channel, my mom-in-law. So welcome my mom-in-law to my channel. हेलो नमस्ते। तो मम्मी आपको नेदरलैंड्स में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन यहाँ सर्दी बहुत है। हाँ सर्दी तो बहुत है। आप क्या देखना चाहते हैं नेदरलैंड्स में? यहाँ डच कल्चर का देखना चाह रहे हैं। ओके तो यहाँ पे एक जगह है जहाँ जिसका नाम है ज़ांसे स्कैन और वहाँ काफ़ी कुछ है डच कल्चर के बारे में देखने के लिए, तो वहाँ चले? चलो ओके सो लेट्स गो। तो अभी हम लोग डच वुडन शूज़ देखने चलते हैं। डच लोग वुड के शूज़ पहनते हैं और यहाँ पे बताते हैं वो कैसे वुडन शूज़ को बनाते हैं, तो चले। नाउ वी आर गोइंग टू सी डच वुडन शूज़ हाउ दे आर मेड, सो लेट्स गो देयर। All wooden shoes were totally made by hand. For the outside shape, they used this large knife, like this. For the inside shape, they used several sizes of spoon scoops, like this. It was a tough job. It took around 2.5 to 3 hours to make a pair, which is 3 pairs a day without any breaks. Shoe. But it's still not finished. Because like I told you, the wood was very wet. It's all fresh. I'll show you. Oh my god. This is all water of the tree. And this is why we need to dry it for 3 to 4 weeks. Once it's dry, we polish it. Sandpaper smell like this. Finishing result when it's well polished and dried is a wooden shoe that fits a child of around 4 years old. Looks very big for a 4-year-old, but that's normal. It's all wooden shoes. Are big. The reasons to wear them is because they're warm, waterproof, and super strong, like a safety shoe. A small car from maximum 500 kilograms can drive over your foot and nothing will happen. Which you shouldn't try at home, by the way. It was wear with thick wool socks and with 1 finger space extra room behind the heels to make it comfortable, because wood doesn't stretch. Wear them too tight and you will get blisters and sores. And that's how it's done. Thank you for your attention. I hope you enjoyed. Try some wooden shoes on yourself and have a nice day. Zaanse Schans. नेदरलैंड्स चीज़ के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे काफ़ी सारा डिफरेंट टाइप का चीज़ मिलेगा और वो कैसे बनता है वो भी पता चलेगा और हम वो सारी चीज़ खा के देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो नाउ विल गो इनसाइड एंड विल ट्राई डिफरेंट चीज़ेस विच आर मेड इन नेदरलैंड्स। लेट्स गो इनसाइड। मम्मी आप चीज़ बेच रहे हो क्या? यस कितने का है? बहुत महंगा है। और ये है यहाँ का प्रसिद्ध विंडमिल्स का एरिया। नेदरलैंड्स बहुत ही फेमस है विंडमिल्स के लिए और ये ट्रेडिशनल विंडमिल्स हैं। And these are the famous Netherlands traditional windmills.
और अभी हम देखेंगे एल्बर्टाइन की फर्स्ट शॉप, जो हम लोग जहाँ से ग्रोसरी का सामान खरीदते हैं उसकी फर्स्ट शॉप यहीं पे बनी थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट शॉप ऑफ एल्बर्टाइन व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड हियर इटसेल्फ। तो आप लोगों को कैसा लगा ये डच विलेज ज़ांसे स्कान? यहाँ सब कुछ अच्छा था, लेकिन डच मॉडर्न शू बनाने की जो फैक्ट्री है वो बहुत अच्छी लगी और उनको शू बनाने की टेक्निक बहुत अच्छी, उन्होंने हम लोगों को शू बना के भी दिखाए और वहाँ का जो स्टाफ था उसने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया। और आपको चीज़ कैसा लगा? चीज़ इज़ डिफरेंट। और विंडमिल्स यहाँ का डच संस्कृति का पुरानी धरोहर है, जो उन्होंने अभी तक इसको जीवित रखा है। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत डच गवर्नमेंट इसको काफ़ी अच्छे से रख रही है, अच्छे से रखा उन्होंने, जिसको हम लोग आज देख सके। हाँ। बाकी सभी चीज़ बहुत ब्यूटीफुल थी। Now we are back home. If you have liked my video, then do give a thumbs up. Also do subscribe to my channel Shades of Megs. You can follow Shades of Megs on Facebook, Instagram and Twitter. See you in my next video. Till then, bye-bye.